The following program contains live. The following program contains live psychic tarot readings, personal insights, and intuitive guidance intended for entertainment and self-reflection. Hello everyone, what is up? What's going on? So good to see you guys over here. Let's see who all is present right now in the comments tab. Eternal Classics is saying Assalamu alaikum Shaheer, how are you? I am doing good. Bean is here, she's saying hello, hi. Furva is saying hello, hi Furva. Bean says, Salam Shahir, recently you have told me to go to the doctor for checkup and I have diagnosed with something pretty bad, pretty sad, but thanks, your reading was 100% accurate. Alright, I'm very sorry to hear about that, but it's good that that you were able to go to the doctor and you were able to find out exactly what it was. So, better safe than sorry. Manur Qayyum is saying Salam, Walaikum Assalam. Ishal Zahid saying, can I ask a question? ऑल राइट, तो जो लोग भी देख रहे हैं अभी, अलीनो है सिंह हेलो, हाय अलीनो, सारा हेलो सारा, जितने लोग भी अभी देख रहे हैं रीडिंग्स, अगर आपको चाहिए या कोई भी सवाल पूछना है, द रूल्स टू गेट अ रीडिंग आर वेरी वेरी सिंपल. मैंने यहाँ पर चार्जेस मेंशन करे हुए हैं. 3 कार्ड रीडिंग के चार्जेस 5000 रुपीज़ हैं, 7 कार्ड रीडिंग के चार्जेस 15000 रुपीज़ हैं. मेरी बैंक डिटेल्स यहाँ पे मेंशन हुई हुई हैं, एंड जैसे ही आप फंड ट्रांसफ़र करेंगे तो आपकी रीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी. क्योंकि अभी लाइनअप में ओके, वी हैव अ प्लैटिनम मेंबर हु इज़ आस्किंग टू गेट अ रीडिंग, सो वी विल स्टार्ट विद अ रीडिंग. सारा इज़ आस्किंग टू गेट अ रीडिंग. Yasmin Shoaib is saying Assalamu alaikum, please introduce yourself as I'm new. My name is Shaheer Knows. Um, I am a very intuitive individual. ये मेरा YouTube लाइव शो है विच इज़ नोन एज शहीर नोज़ लाइव. मैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को यहाँ पे लाइव आता हूँ 9 PM ऑनवर्ड्स. लोग मुझसे सवालात करते हैं कमेंट्स में और फिर मैं उनके सवालात के जवाब देता हूँ. ये जो सवाल करते हैं ये इनके ज़िंदगी के बारे में होते हैं, अबाउट देयर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंड आई एम आंसरिंग देम थ्रू टैरो कार्ड्स. That is what's going on. There are charges to get a reading from me. 3 कार्ड रीडिंग होती है जिसमें 3 कार्ड्स आते हैं सामने, फिर मैं आपको बताता हूँ कि उन कार्ड्स का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन. उसके चार्जेस 5000 रुपीज़ हैं. अगर आप 7 कार्ड रीडिंग लेती हैं, जो कि यहाँ पे होती है 7 कार्ड रीडिंग, उसमें 7 कार्ड्स होते हैं, वो ज़्यादा इन डिटेल जो है वो रीडिंग होती है, और उसके चार्जेस जो हैं वो हैं 15000 रुपीज़. मेरी बैंक डिटेल जो है वो यहाँ पे मेंशन हुई हुई हैं, तो जैसे ही आप बैंक ट्रांसफ़र करेंगी फ़ंड्स तो आपकी रीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी. सो दैट इज़ प्रिटी मच what we are doing here. Let me just get this perfect. Okay.
अगर आप चाहती हैं कि आप बार बार मेरे सेशन में आएँ और पूरे महीने आपको कम प्राइस में रीडिंग मिले, जैसे मेरे प्लैटिनम मेंबर्स हैं जो अभी देख रहे हो, और अभी मैं रीडिंग करूँगा अभी अपने प्लैटिनम मेंबर्स के लिए जो कि मेरे हर लाइव सेशन का हिस्सा होते हैं। तो अगर आप चाह रही हैं प्लैटिनम मेंबर बनना, तो उसका लिंक जो है वो मैंने यूट्यूब चैट में, जो लाइव चैट यहाँ पे चल रही है उसमें पिन किया हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगी और प्लैटिनम पे जाके आप सेलेक्ट करेंगी, तो फिर आपको जो है वो प्लैटिनम मेंबरशिप मिल जाएगी। फिर आपको मेरे हर सेशन में 3 कार्ड रीडिंग मिलेगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा पेमेंट। बट उस लिंक पे क्लिक करने से पहले मेक श्योर करिएगा कि आपका वीपीएन जो हो वो ऑन हो। अगर वीपीएन नहीं ऑन होगा तो वो पेज पाकिस्तान से एक्सेसिबल नहीं है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर से देख रहे हैं उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो एक्सेसिबल होगा, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हैं स्पेसिफिकली तो वीपीएन अपने फ़ोन में आपको ऑन करना पड़ेगा, फिर जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो पेज एक्सेसिबल होगा। उसके अलावा अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप shaheernose.com पे जा सकते हैं। shaheernose.com मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, https www.shaheernose, आप जाके गूगल पे लिखेंगे shaheernose.com तो मेरी वेबसाइट आ जाएगी सामने, और ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है लाइव चैट के अंदर shaheernose.com। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगी तो मेरी वेबसाइट खुल जाएगी, वहाँ से भी आप प्लैटिनम मेंबरशिप जो हैं वो ले सकती हैं। उसके अलावा अगर किसी को एनिग्मा पोर्टल चाहिए या टीकाबू टेलीपैथी का जो मेरा कोर्स है जिसमें मैं माइंड रीडिंग सिखाता हूँ, अगर वो बाय करना है तो मेरा टिकटॉक है शहीर नोज़, जो मेरा सेम यूट्यूब पे नाम है वो उसी नाम से सेम मेरा अकाउंट है टिकटॉक पे। हाउएवर अगर आपको मेरा जो मेन अकाउंट है शहीर नोज़, अगर उस पर रिप्लाई नहीं मिल रहा और वो ऑटोमेटेड मैसेजेस आए जा रहे हैं अगर, तो फिर मेरा एक और टिकटॉक है विच इज़ माई क्लाइंट्स ओनली टिकटॉक, उसका नाम है द एनिग्मा पोर्टल। अगर आप मुझे वहाँ पे मैसेज करेंगे तो मैं डायरेक्टली आपसे 1-on-1 बात कर सकता हूँ। So if you are interested in getting an Enigma portal, a lunar Enigma portal, you can message me there. Alright, तो आज का शो हम स्टार्ट करते हैं। We will start with our platinum member Sara. I'm waiting for Sara to post her question and then we will get started with the readings. I hope everybody is doing well, everybody is here. Rao Junaid is over here. The queue so far is Sara is in line, and after that everybody is free to join. Okay, so Sara has posted a question, I believe. Sara is saying, it's a funny situation, but I'm trying to get in touch with the designer and she has told me that she can't accommodate me for the month of November. Do you think she might still be able to make my dresses? All right, it's time to do Sara's reading. Time for a 3-card reading. Let's see what is going on regarding Sara's wedding dresses. Okay, the first card you get is the world, meaning that सिर्फ एक चीज़ नहीं हो रही है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एट वंस हैंडल हो रही हैं। आप ड्रेस की बात कर रही हैं, बट एट द सेम टाइम देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, और क्योंकि चारों चीज़ें बैलेंस में हो रही हैं तो आप ये नोटिस करेंगी कि अगर फ़िलहाल अभी मैंने आपके आगे के कार्ड्स अभी नहीं निकाले हैं, लेकिन आप ये बात नोटिस करेंगी जो कि मुझे लग रहा है इंटुइटिवली दैट आपका जो ड्रेस के अंदर थोड़ा जो डिले आ रहा है, तो आप नोटिस करेंगे कि बाकी की चीज़ें जो हैं अगर आपके ड्रेस की टाइमिंग के साथ अब अलाइन होने वाले हैं या हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट। तो अब आपके जो आगे आने वाले कार्ड्स हैं उसमें हम यही चीज़ एक्सप्लोर करेंगे कि ये डिले जो है ये क्यों आ रहा है, अच्छा है या बुरा है। बिकॉज अभी सो फार मुझे दिख रहा है कि बाकी की चीज़ें जो हैं उनको कैचअप करने का टाइम मिल जाएगा, आपके जो ड्रेस के अंदर जो चीज़ें जो भी डिलेज आ रहे हैं। ऑल राइट, एंड जहाँ पे मैंने पहले कार्ड में मैंने बैलेंस की बात करी थी कि एवरीथिंग नीड्स टू बी बैलेंस एंड नीड टू कैच अप, तो सेकंड कार्ड जो है इट इज़ डबलिंग डाउन ऑन दैट सेम थिंग, दैट दिस इज़, यू कैन थिंक अबाउट इट एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, दैट इतनी जल्दी जो आपका वो रेडी नहीं हो रहा है, परहैप्स इट इज़ फॉर द बेटर एंड अदर थिंग्स आर एबल टू कैच अप ऑल्सो। एंड ऑल्सो
Rather than switching to an alternate route, I would say that the person that you are going to for the dresses, they're very, very experienced, they're very reliable, so it is worth the wait. That is also what the second card is saying over here. All right. Let's see what the third card is saying for Sara. Okay, all right, and you will be able to get the dress just the way you want to, but you just need to be patient, and you need to work according to the timeline that the universe is offering you right now, Sara. So I wouldn't say that it's a bad thing कि आपकी जो ड्रेस है उसका अभी फ़िलहाल उस हिसाब से टाइम नहीं मिल रहा है, but what the cards are telling me is that this is happening for the better, and you need, in order for everything to happen perfectly and for everything to Sara is asking, would she take my order? I do see that she is taking your order. I do see that, but थोड़ा सा आपके ड्रेस के अंदर जो डिले आ रहा है वो एक अच्छी वजह से आ रहा है डिले, and she will be able to do it. If I answer specifically this question, I see her balancing two things at once, and because she's so skilled, she will be able to do it. But you need to show that you are very, very interested, and this is like, very, very important to you, which needs, the message needs to be put forward in that manner. Even though they are dealing with, I'm sure, brides every day, but you really need to make a mark. I see them handling both things at once, but फिर भी थोड़ा जो delay आ रहा है, it is for the better so that the other things can catch up. And then in the final card, we can see that it is the most perfect day which is being spent under the sun. It is also very likely that, I don't know if you decided for a night event, but it could also be a very beautiful day event. आपकी जो शादी का जो event आ रहा है, it could be that, or maybe the cards are saying that it would be nice to perhaps go towards that route, or maybe keeping an event for the daytime. That is also what is being shown in the final card. So that was Sara's 3-card reading. Sara is our platinum member, which is why she gets a reading in every session. All right. Okay. So that was Sara's reading. I hope that reading gives Sara some insight and some peace. Eternal Classics is saying, Shaheer, I made a video of all my readings, but I cannot find one reading of 9 July. Actually, I got 2 readings on 9 July. I will go and check exactly which session you're talking about. कुछ सेशन जो हैं वो मेरे प्राइवेट कुछ सेशन जो है वो प्राइवेट हैं, कुछ सेशन जो है डिलीटेड हैं, बट अब से मैंने डिसाइड किया कि आई विल बी पोस्टिंग ऑल द सेशंस, सो आई विल हैव टू चेक एग्जैक्टली विच वन यूर टॉकिंग अबाउट. कुलसूम रिजवी कह रही हैं, हाय शहीर, आई जस्ट पेड. कुलसूम रिजवी, येस, आई हैव रिसीव्ड योर अमाउंट and we will get started with your reading as soon as you post your question. Sara Khalid, who is a platinum member who we just did a reading for, says, perfect, thank you, you are most welcome, Sara. Alino is saying, Shaheer, can I ask a general question? Yes, you can ask a general question, but you need to understand that Sara Khalid is saying, guys, nothing is better than platinum membership. Absolutely. So, Alino, if you want to ask a question, you can transfer the funds according to the kind of reading that you want, or I would say become a platinum member in order to get a reading. Alino saying, no, it's just a question. All right, you can ask me any question. Feel free. You don't even have to mention it. You can just post the question, I'll answer. Sure, you can ask. No problem.
All right, we are waiting for Kulsum to post her question, and as soon as she does that, we're going to get started with her reading. Alino is saying, can someone tap into dimensions from 3D to 5D? And can the happenings of 5D be known or detected in 3D? This question. Yes, absolutely, that is possible. And that is possible through astral projection. So you get the astral plane in many ways is the fifth dimension, which is why in my book Astral Projection with Shaheer Knows, I teach people to go forward and backwards in time, and it's a whole chapter. Everything is covered in that book specifically. But if you are using another method which you have found online, then you can also do that. But it is absolutely possible to detect things in this dimension from that dimension. And there are many people, it is very, very possible that you have actually visited the dimension while you thought that you were dreaming, but you were actually there. शबाना तबस्सुम जो है वो पूछ रही हैं व्हाट्स गोइंग ऑन. शबाना, ये मेरा शो है शहीर नोज़ लाइव, जहाँ पे मैं लोगों के लिए टेरो कार्ड रीडिंग्स करता हूँ. लोग अपने सवाल पूछते हैं. 3 कार्ड रीडिंग्स होती हैं, वो 5000 रुपीज़ की हैं. 7 कार्ड रीडिंग जो है वो ज़्यादा डिटेल इन डेप्थ रीडिंग होती है, वो यहाँ पे होती है. उसके चार्जेस 15,000 रुपीज़ हैं. मेरी बैंक डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं. दो तरीके हैं रीडिंग लेने के. एक ये आप पैसे ट्रांसफ़र करें, दूसरा ये है कि मैंने यूट्यूब के कमेंट्स में लिंक मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके आप प्लैटिनम मेंबरशिप ले सकती हैं. प्लैटिनम मेंबरशिप में ये होता है कि आप मेरा कोई भी सेशन ज्वाइन करके उसमें 3 कार्ड रीडिंग जो है वो ले सकती हैं. उसके अंदर मेरा एनिग्मा ड्रीम कास्ट सिस्टम भी इंक्लूडेड है. और अगर आप प्लैटिनम मेंबर बनती हैं तो पूरे महीने की जो रीडिंग्स हैं वो बहुत कम प्राइस में आपको जो है मिल जाएंगी. मीनिंग के प्लैटिनम मेंबरशिप की आप वन टाइम प्राइस पे करेंगे और फिर पूरे महीने आप किसी भी सेशन में ज्वाइन करके हर सेशन में आप रीडिंग ले सकती हैं, 3 कार्ड रीडिंग. तो उसके अलावा मेरी वेबसाइट है shaheerknows.com. आप गूगल पे जाके लिख सकती हैं shaheerknows.com. वहाँ से भी आपको सारी डिटेल्स जो हैं वो मिल जाएंगी कि क्या क्या इंक्लूडेड है मेरी प्लैटिनम मेंबरशिप में. तो ये तरीका है रीडिंग लेने का. लोग मुझसे सवालात करते हैं मेरा सेशन ज्वाइन करके, और फिर मैं उनके सवालात के जवाब देता हूँ अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स. उसके अलावा अगर आप नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, तो आप यूट्यूब पे मेरा नाम सर्च कर सकती हैं शहीर नोज़, और वहाँ पे आपको मेरे सारे इंटरव्यूज़, टीवी शोज़, टीवी अपीयरेंसेस और सब चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी. जस्ट टू familiarize yourself with my work. Alino is saying, can people naturally have the ability to do astral because I did it sometimes? Yes, absolutely. So there are some people who without any formal technique can just do it naturally without even learning it. It could be innate also. In fact, the first time I tried it, and this is also mentioned in my book, the very first time I did it, it was naturally only. And then I started to work towards creating a more formal way of doing astral projection, which works 100% of the time, every single time. Okay, so Kulsum जो हैं वो लिखती हैं, when will I achieve be able to fulfill my first manifestation I made on the Enigma portal? How can I achieve it? Will it be through lottery? All right. अच्छा कुलसुम, मैं बहुत सारे लोगों के एनिग्मा पोर्टल्स प्रोग्राम करता हूँ, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा एग्जैक्टली आप किस चीज़ को अचीव करने की बात कर रही हैं. अगर आप ओवरऑल पूछ रही हैं कि वट एवर आई हैव प्रोग्राम विल इट कम ट्रू, तो आई कैन टेल यू इवन विदाउट looking at the cards that whatever gets programmed in the portal, it absolutely comes true. And your first card, let me just do this. It's time for a 3-card. The first card that you get is the Judgment, meaning that the time that you're looking forward to, or that you have been waiting for, is just around the corner, or is like it's been lurking in the avenues, like behind the scenes. It is approaching towards you slowly, and it is almost going to be like a wake up call of sorts, जो कि आपकी ज़िंदगी में एकदम से लगे. It is going to surprise you when you are not expecting it. All right, so it is going to surprise you when you're not expecting it, and it's very important to understand that
it is very very important to understand that sometimes it might feel like, things are moving slow, perhaps, like things are not moving according to the pace that you want to, but you need to understand that as long as Enigma portal आपके phone पे लगा हुआ है, it is manifesting everything for you every single day in real time. It is just that if something is supposed to happen naturally in 6 years, the Enigma portal will slice the time in half and make it happen in 3 years. So it slices the time in half or whatever it is that you're trying to manifest. The second card that you've gotten is Justice, meaning that आप बहुत ज़्यादा जो हैं वो इस चीज़ की तरफ जो हैं वो सोच रही हैं, and this is constantly on your mind, which leads me to point number 2 about the Enigma portal, is that the portal works best when you do not realize that it's there. Meaning कि अगर आप रोज़ अपने फ़ोन को देख रही हैं और स्टेयर कर रही हैं कि कब काम करेगा, दैट कंपेयर टू दैट पोर्टल जब ज़्यादा फास्टर काम करता है जब आप रियलाइज़ नहीं करती कि पोर्टल जो है वो वहाँ पे आपके सामने रखा हुआ है. मीनिंग दैट you do not think about the portal, you keep yourself distracted, and because the portal is designed to work with your subconscious mind, तो जितना कम आप ध्यान देंगे इनिग्मा पोर्टल की तरफ उतना ज़्यादा जल्दी वो काम करेगा. think of it like a sleeping investment. So that is what is being shown in the present regarding this. And फ्यूचर में जो आपका कार्ड है, इट इज़ शोइंग यू दैट यू आर गेटिंग एग्जैक्टली व्हाट इट इज़ दैट यू आर सीकिंग, exactly what it is that you're looking for, but you need to change your tactics in the present. जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोच रही हैं, सिचुएशन को जज कर रही हैं और आप बार बार ये सोच रही हैं कि कब होगा, अभी तक क्यों नहीं हुआ. You need to distract yourself and think of it like a sleeping investment and let the portal work for you in the background. And I promise you that it will all fall into place and it will happen for you, because in the future card you are also getting this is the card of being like it is showing patience, that with patience you are getting there. And also one more thing is that there are some people who get the portal and they think that okay, I got the Enigma portal program, but now I will not do anything and the money will just fall into my lap. If you are taking that approach, which is like, for example, like you mentioned, okay, I will try to win a lottery, I will do some kind of a prize bond, something like that, then it's fine. But what I recommend to people is that do some kind of work so that everything happens and fall into place much faster. तो अगर आप उसकी तरफ कोई भी एक्शन ले रही हैं, सिर्फ यही नहीं कि आप जो हैं वो लॉटरी के ऊपर जो है डिपेंड कर रही हैं, you can also work towards doing something, any kind of action where you are actually putting some kind of a trigger or action or tremor into the universe, where the universe realizes that okay, you know what, this person is working towards this. The portal will work much faster because now आप अपने behalf पे भी कुछ चीज़ कर रही हैं. So that is what I would recommend. So I see it happening, but you need to be both the cards are talking about patience and both the cards are talking about not thinking too much about it and focusing on things that perhaps will make you money or are keeping you busy. So these are the two ways to move forward. And think of the Enigma portal as a bonus which is working for you in the background, and whatever you are naturally trying to achieve, it is going to slice the time of that achievement in half. So it is going to happen much faster. But to answer your question, do I see the money coming into your life? Yes, I do, because this is a very positive card to get. I will still pull out one more card for you just for more clarity, just so we could see. And you get the most perfect card in all of tarot. So not only are you achieving the finances, but you are achieving all the things that you have programmed into the portal. It is not just one thing. Even though you're constantly looking, like at this present time, तो ये आपके दिमाग पे भी सवार हुआ है. I can understand that perhaps it's very urgent for you, but you need to understand that the universe works according to its timeline and the portal will speed that up for you. Another thing that you can do, it is not necessary, but it will absolutely work. If you're using a regular Enigma portal, you can opt for a lunar Enigma portal, which works twice as fast. However, if you're just using the regular Enigma portal, that is fine also.
All right, so that was a reading for Kulsum. And now let's see who else is next in line. Let's just make sure the cards are calibrated. Yes, they are. Kulsum is saying, okay, thanks Shaheed, you are most welcome Kulsum. That was a 3 card reading for Kulsum. और जो लोग भी अभी देख रहे हैं और अगर चाह रहे हैं कि उनको रीडिंग मिले या किस तरीके से रीडिंग लेनी है, किस तरीके से जो है वो मेंबरशिप लेनी है, प्लैटिनम मेंबरशिप, तो these are the rules to get the membership. Raj is saying, bro, listen. Yes, I am listening. Safiya Munawwar कह रही हैं, what's your Insta ID? I can't find it. मैं Instagram पे नहीं हूँ. मेरा Instagram जो है वो Instagram में डिसेबल किया हुआ है, तो मेरे पास अभी करंटली कोई भी Instagram अकाउंट नहीं है. मेरा TikTok अकाउंट है @Shaheer Knows के नाम से, जो मेरा सेम YouTube पे नाम है वही TikTok पे नाम है. तो वो मेरा वाहिद अकाउंट है अभी TikTok पे. और एक और मेरा TikTok पे अकाउंट है, उसका नाम है द एनिग्मा पोर्टल. ये मेरे 2 अकाउंट्स हैं, द एनिग्मा पोर्टल एंड शहीर नोज़ टिकटॉक के ऊपर. ये मेरा अकाउंट नेम है. इंस्टाग्राम पे मेरा कोई अकाउंट नहीं है अभी, मेरा इंस्टाग्राम डिसेबल्ड है. तो अगर कोई भी आपको मेरे नाम से कोई चीज़ बेचने की कोशिश कर रहा है, दैट इज़ नॉट मी. समवन इज़ ट्राइंग टू स्टील योर मनी. Neelam Dari is saying, Assalamu alaikum, brother. Wa alaikum assalam. Anyways, so I was mentioning that अगर कोई भी रीडिंग में इंटरेस्टेड है, अगर आपको 3 कार्ड रीडिंग या 7 कार्ड रीडिंग चाहिए, या अगर आपको प्लैटिनम मेंबर बनना है, तो यू कैन फॉलो दीज रूल्स. The charges for a 3-card reading are 5,000 rupees, and the charges for a 7-card reading are 15,000 rupees. You can transfer the funds to the bank details mentioned here. Once the funds are transferred, your reading will begin. You can also join the inner circle of Shaheer's Platinum members and get 3-card readings all month long in every session. The link to get the Platinum membership is pinned in the comments of the live chat. Make sure your VPN is open before you click on the link, or else the membership page will not be accessible. यासी नवीद कह रहे हैं, हाउ टू गेट एनिग्मा पोर्टल फॉर क्रिप्टो और फोरेक्स. इट्स वेरी सिंपल. यू कैन मैसेज मी ऑन माई टिकटॉक विच इज़ द एनिग्मा पोर्टल. द एनिग्मा पोर्टल मेरा टिकटॉक अकाउंट है. वहाँ पे आप मुझे टिकटॉक पे मैसेज कर दें, तो आपके लिए मैं ट्रेडिंग पोर्टल बना दूँगा. उसके अंदर आपके 10 के 10 जो गोल्स होंगे वो सारे फाइनेंसेस और मनी रिलेटेड होंगे. If you want to get the trading portal in just 1 second. हाँ, तो अगर आपको जो ट्रेडिंग पोर्टल है विच इज़ प्रोग्राम स्पेसिफिकली फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग, अगर आपको वो 25 डेज़ में चाहिए तो इट विल कॉस्ट यू 1,50,000 रुपीज़. अगर आपको 4 डेज़ में एक्सप्रेस डिलीवरी चाहिए तो इट विल कॉस्ट यू 2 लाख रुपीज़.
Rao Junaid is saying bye bye Shaheer. Take care, look after yourself. All right, we are back after a short pause. Let's see what people are saying. Sabah कह रही हैं Shaheer, can you do a 3-card reading for me free today about my life and health? I do not do any free readings in this session. The charges for the readings, 3-card readings, are 5,000 rupees. 7-card reading के charges यहाँ पे लिखे हुए, मेरी bank details जो हैं वो यहाँ पे mentioned हैं. I highly recommend becoming a platinum member. Halida कह रही हैं, don't you think it's not right in Islam to ask or predict about things? So I always say this in almost every session. What I'm doing here is not making any predictions, meaning that I'm never saying and I'm never claiming that जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ that is exactly what is going to happen, या बस मैंने बोल दिया अब यही होगा. It is not like that. These are tarot forecasts. You need to understand what that means. Meaning that I am sensing your energy today using my intuition, the feeling I get whenever I read your question.
and then based on the cards I tell you the meanings of the cards that you get, and based on my intuition I give you my answer. So it is not a prediction. I'm not telling anyone के ये इस वक्त पे ये इतने बज के टाइम पे ये इस डेट पे ये होगा, इस तरह की बातें यहाँ पे मैं नहीं करता हूँ, ना ही मैं कभी करता हूँ. So you need to understand what this is. This is just the same as me and you sitting in an art gallery and looking at a painting together, for example this, and me looking at the painting and you looking at the painting, and then based on the biggest question of your life, no matter whatever you have, whatever the question is in your mind, I try to derive answers from the paintings that I see. This is a process of intuition. This is not about predicting anything. Another thing that is also happening is that based on your feelings and energy, I am telling you what I see is most likely to happen. So once again, if for example I give this example always, कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक ऐसे शख्स हैं जो रोज़ सिगरेट का एक डब्बा पीते हैं, एंड आप मुझसे ये पूछते हैं कि शहीर आपको क्या लगता है कि अगले आने वाले टाइम में मुझे मेरा क्या होगा, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आपके जो आज की जो हरकतें हैं या जो भी आपकी करंट एनर्जी है उसके हिसाब से आगे अगले आने वाले टाइम में आई सी दैट आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होंगी आपके लिए. इज़ दैट अ प्रिडिक्शन? नो, it is just a very logical and very clear as day kind of way to see things, and putting it out there for you that this is what is going to happen according to the actions that you are taking today. And then another question comes forward that अच्छा अगर इतना ही simple है तो now why cannot everybody do that for themselves? It is because it is proven psychologically that when a person is going through any situation, any kind of situation, it is borderline impossible for them to really see what is it that is exactly going on in their life. तो अगर आप खुद सिचुएशन से गुजर रहे होंगे तो जो बंदा जो थर्ड पर्सपेक्टिव से आपको चीज़ कोई बता सकता है वो आप कभी भी खुद उस तरीके से नहीं जज कर सकते unless you have spent your whole life working with people or something like that. So that is why people come here and they tell me about the situation and I give them my honest and intuitive answer. And we also use tarot cards to derive different kinds of meanings. And often जो चीज़ें सामने हमारे जो हैं वो वैसे निकल के नहीं आ रही होती आपके सवाल में, वो often cards की meanings के साथ जो चीज़ सामने आती है उसके अंदर से निकल आती है वो. So that is what we're doing. Nobody is making any kind of prediction. I know the rules of religion and I understand all these things. So believe me, if you feel like I do not know about religion, I know more than the regular person that you can find out there on the street. Perhaps even more than that. So yes. Abdullah is saying, I have paid. Can I get a 3-card reading about my career? Yes, absolutely, Abdullah. You can get a 3-card reading about your career. Would you like to ask a specific question regarding what is it that you're wanting to know about your career? किस तरीके का काम आप करते हैं? If you give me details, I can derive more details for you. If you just want a general reading about what's to come in the future regarding your career, we can also do that. But I recommend that you mention in your question the kind of work you do, and at least mention some details of the kind of things that you're wanting to do perhaps, so I can derive those kinds of details exactly from the cards that we get. अगर आप बोलेंगे अब्दुल्ला कि नहीं मैं चाह रहा हूँ आप मुझे जनरल रीडिंग दे दें बस करियर की, तो मैं वो भी आपके लिए कर सकता हूँ. बट बेहतर ये है कि आप जो हैं वो डिटेल्स मेंशन करें ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी इन डेप्थ जाके रीडिंग कर सकूँ. अलीना सिंह मैं रीडिंग लेती ही
लेती ही नहीं. I have only Dreamcast membership. Alina, you can ask me a question. It's fine. I can do a reading for you. It's okay. Just this one time though. Abdullah is saying I am a forex trader. All right. Okay. Let's see what is going on regarding this situation. Oops. The very first card that comes forward is the Hangman. The second card that's coming forward, I'm going to put it face down over here. All right. Two cards are unknown, which is your president is unknown because अभी आप बहुत confused हैं इस काम को लेकर. फ्यूचर में भी आपको नहीं पता है कि क्या हो रहा है. बट पास में आपने बहुत सारे लॉसेस बेयर करेंगे, मुझे दिख रहा है आपके पहले कार्ड के अंदर. सो अब्दुल्ला, पहली बात तो ये है कि और ये जो लॉसेस हैं ये बहुत बड़े लॉसेस हैं. ये ऐसे लॉसेस हैं जो परहैप्स अगर किसी नॉर्मल बंदे के होते तो वो लाइक बहुत ही ज़्यादा अपनी जगह से हिल जाते वो. But what I see is that you are somebody who's very, very strong, very, very optimistic, very, very positive. And in the present, I'm seeing is that you actually are getting the sun, which is a very, very positive card to get. Meaning that पहले जो आप काम कर रहे थे वो on your own कर रहे थे, but अब आप किसी के साथ मिलके ये काम कर रहे हैं. और क्योंकि आप किसी के साथ, एक सेकंड रुकिएगा. क्योंकि आप पहले जो हैं ये काम किसी के साथ मिलके नहीं कर रहे थे तो परहैप्स उसमें उस तरीके की गाइडेंस या उस तरीके की जो है वो एक कैलकुलेशन नहीं थी जो अब मुझे होती हुई दिख रही है. और अब जो भी पार्टनरशिप आप फॉर्म करने का सोच रहे हैं या किसी के साथ अगर कर रहे हैं या किसी की एक्सपर्टीज़ ले रहे हैं तो वो जी जिसको आप फॉलो कर रहे हैं या परहैप्स आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं, तो energies do matter and different people will bring different kind of energies into your not just your personal life but your work life also, your career also. तो ये जो है ना जिस तरीके की भी पार्टनरशिप आप कर रहे हैं या परहैप्स अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो रहा है इन द प्रेजेंट. अब मुझे फ्यूचर में पता लगेगा इस कार्ड में कि क्या आगे जाते हुए जो है वो इज़ दिस पार्टनरशिप गोइंग टू बी समथिंग दैट लास्ट वेरी लॉन्ग, or is this going to be something that is just only happening in the present और फ्यूचर में जो है वो कुछ और हो रहा हो. बट अगर आप पार्टनरशिप आपने नहीं करी और करने का सोच रहे हैं जहाँ पे एक नहीं दो लोग मिलके साथ काम करें, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू. ये आपके प्रेजेंट में जो है वो सामने आ रहा है. मोहम्मद अब्दुल्ला ख़ान जो है वो पूछ रहे हैं व्हाट हैपन टू योर इंस्टाग्राम शहीर. मेरा इंस्टाग्राम जो है वो डिसेबल हो गया. इंस्टाग्राम ने मेरा अकाउंट जो है वो उड़ा दिया है, तो अभी मैंने जो है उस पर काम कर रहा हूँ. मे बी आई विल गेट इट बैक, लेट्स सी. आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक. बीन कह रही हैं आई एम गोइंग टू प्लैटिनम मेंबरशिप थैंक्स टू शहीर. मुझे पता लग गया व्हाट्स हैपनिंग विद माय हेल्थ, अदरवाइज डॉक्टर वाज गोइंग टू टेल मी ऑन लास्ट स्टेज. राइट, आई एम ग्लैड दैट यू कैन स्पॉट दिस बिकॉज वी सॉ दिस इन योर रीडिंग. अलीना कह रही हैं शुड आई हैव टू ओनली आस्क अबाउट मी और आई कैन आस्क ऑन समवन एल्सेस बिहाफ. यू कैन आस्क ऑन समवन एल्सेस बिहाफ ऑल्सो. ओके, सो आपका जो फाइनल कार्ड है अब्दुल्ला वो पेंडिंग है और आपके फाइनल कार्ड में हमें ये दिख रहा है दैट मूविंग फॉरवर्ड जिस तरीके का भी काम आप करना चाह रहे हैं या जिस तरीके की पार्टनरशिप आप फॉर्म करना चाह रहे हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग लास्टिंग. अब अगर आप सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप ये जानना चाह रहे हैं कि यही काम क्या मेरा आगे चलता रहेगा, तो आई सी दिस एज अ लाइफ लॉन्ग थिंग.
And with time, this is the future card that you're getting is the card of knowledge. This is the knowledge card, meaning that ओवर टाइम आप अनपैरेलल जो है तरीके की नॉलेज डेवलप कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर, ऐसी नॉलेज दैट परहैप्स जो लोग आपके साथ के जो हैं अभी लोग जो सीख रहे हैं, जो आगे आ रहे हैं, जो प्रोफेशनली इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके पास भी वो नॉलेज नहीं है या वो टिप्स नहीं है जो आपके पास यहाँ पे मुझे फ्यूचर में दिख रहे हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट कर रहे हैं। तो इसका ये भी मतलब है और इसका ये भी मतलब है दैट अगर आप किसी तरीके की पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं या किसी के साथ आप मिलकर काम करना चाह रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी फ्रूटफुल। All right. Okay. So that is what I see happening regarding your career. I hope that it gives you some insight and I hope that it gives you some peace. Alino कह रही हैं, Shaheer, are you sure you will do my reading? Yes, of course. Why not? For all the sessions that you have joined, this is the least I can do. I would love to do a reading for you. Bean कह रही हैं, thank you everyone. Treatment will start soon, but it will take time. And I hope and I wish that you get well very, very soon. I'm sending you all my good positivity and good energy, and hopefully you will recover very, very soon. Not to worry. Mohammed Abdullah Khan कह रहे हैं, in the astral plane is what we see shaped more by our subconscious mind or the actual energy grid of the dimension. You see with time as you start practicing it more and more, अगर आप astral projection practice कर रहे हैं तो with time you are going to see more of the actual energy grid of the dimension and less of what is in your subconscious as you will start to becoming more and more accurate. But अगर कोई पहली दफ़ा ट्राई करता है, इट इज़ लिटरली गोइंग टू बी लाइक इमेजिनिंग समथिंग इन योर हेड, इट इज़ गोइंग टू बी सेम. तो कुछ लोग हैं मुझे बोलते हैं कि ये तो मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ, बट दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप. दिस इज़ ऑल्सो यू नो द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रैक्टिसिंग एस्ट्रल प्रोजेक्शन. जो मेरी बुक है एस्ट्रल प्रोजेक्शन विद शहीर नोज, उसके अंदर ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैंशन हुई हुई हैं. Magic in my bones is saying you are such a handsome face, can't get my eyes off you. Have you had dinner before the live today? Thank you so much for the lovely compliments. That really means a lot to me. That's very sweet. I have not had dinner, but I will have dinner after the live. I love how people in the comments are caring about vanity as well as my stomach. That is good. That is all that you need in life. Someone to care about food and someone to find you good looking. That's good. Fakiha Adil is saying hello. Hi Fakiha. Muneeb is saying magic bhai nazar na laga dena. We don't even know if magic is a boy or a girl, but either way, thank you for the compliment. Alino is saying, what's going to happen in my best friend's life? We did a reading for your best friend the other day, but it's fine if you want to ask about her. What's going to happen in my best friend's life? She is going through so much, and also tell me about the boy who is going to come in future, which have you told in the previous reading I got for her. The trauma she is going through is from her parents. There are so many conflicts going on in her house. I thought you were going to ask something about yourself, which is why I was going to do a reading for you. But you want to sacrifice your reading, you want to use the one lucky chance you got and you want to give it up for someone else. Maybe that tells us the kind of person you are. You put others forward before yourself, which is why sometimes you get hurt in that process.
Okay, we have one card that has just jumped out that calls for a replay. You can see that this card is slowly going to come out, and I don't know if you guys saw which card it was, but now you will be able to see it. It was the Wheel of Fortune. All right. Now, फाके अदील पूछ रही हैं, प्लीज सर एक्सप्लेन द एनिग्मा पोर्टल हाउ इट वर्क्स। एनिग्मा पोर्टल एक वॉलपेपर है, फ़ोन की एक इमेज है जो मैं बनाता हूँ, जो फ़ोन पे आप अपना वॉलपेपर बना के लगाते हैं। उस इमेज के अंदर मैं कोई भी आपकी ज़िंदगी की 10 गोल्स प्रोग्राम करता हूँ अकॉर्डिंग टू योर फर्स्ट नेम। तो आपका जो भी नाम है वो नाम और कोई भी 10 विशेज़ जो आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में पूरी हों, वो चीज़ें उसमें सबलिमिनल्स के थ्रू प्रोग्राम होती हैं। और फिर मुझे 25 दिन लगते हैं उसको बनाने में, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी डिलीवरी आप सेलेक्ट करती हैं। 25 दिन के जो है वो चार्जेस कम हैं। अगर आपको 4 दिन में चाहिए, अगर आपको एक्सप्रेस डिलीवरी चाहिए, तो उसके चार्जेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो बेसिकली वो आप मुझे जो है अपनी 10 विशेस बताएंगी, अपना फ़र्स्ट नेम बताएंगी, और फिर उसके बाद यू विल डू द पेमेंट। अगर आपको इनिग्मा पोर्टल 25 डेज़ में चाहिए तो उसके चार्जेस जो हैं वो 1,50,000 रुपीज़ हैं। और अगर आपको इनिग्मा पोर्टल चाहिए 4 डेज़ में तो उसके चार्जेस जो हैं वो 2 लाख रुपीज़ हैं। ऑलराइट। और जो इनिग्मा पोर्टल आपको मिल रहा होगा वो लूनर इनिग्मा पोर्टल होगा, विच इज़ द अपग्रेडेड न्यू वर्जन ऑफ द इनिग्मा पोर्टल। All right, Fakia is saying I already have, sir. All right, that's perfect. Khalida Khan कह रही हैं, will I marry the one I love? The rules to get a reading are very very simple. We have paused mid reading. We have paused. I will continue this reading for Alina in just a second. अगर आपको 3 का रीडिंग चाहिए उसके चार्जेस ये लिखे हैं 5,000 रुपीज़, 7 का रीडिंग के चार्जेस 15,000 रुपीज़ है। मेरी बैंक डिटेल जो है वो यहाँ पे मेंशनड है। खालिदा, अगर आप चाहती हैं कि आपको रीडिंग मिले तो यू हैव टू ट्रांसफ़र द फंड्स अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ रीडिंग यू वांट। अगर आप चाहती हैं कि आप हर सेशन में वापस आएँ, पूरे महीने की आपको रीडिंग्स मिले जैसे मेरे प्लैटिनम मेम्बर्स को मिलती है, तो उसका लिंक मैंने जो है यूट्यूब लाइव चैट के अंदर पिन किया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके मेक श्योर कि आपका VPN चल रहा हो। अगर आपके फ़ोन पे VPN ऑन नहीं होगा तो आप उसको लिंक को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, मगर अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगी तो आपको प्लैटिनम मेंबरशिप की जो है वो सारी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगी। तो कम प्राइस में पूरे महीने की रीडिंग्स आपको प्लैटिनम मेंबरशिप में मिल जाती हैं। जैसे मेरे प्लैटिनम मेंबर्स हैं जो मुझसे सवालात पूछते हैं हर सेशन में, एंड उनको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी पड़ती। 1 टाइम पेमेंट है, इट्स अ स्मॉलर अमाउंट, और उस स्मॉल अमाउंट में पूरे महीने की रीडिंग्स आपको मिल जाती हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गेट दैट। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि आपकी जो दोस्त हैं उनकी जो है वो, अब मुझे थोड़ा सा रिमाइंड कराना कि लास्ट टाइम क्या हुआ था, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इनकी जो फैमिली के अंदर जो चल रहा है पूरा सिनेरियो, ये ऐसा ही चलता रहेगा। ऑलराइट, ये ऐसा ही चलता रहेगा अनलेस ये जो हैं ये अनलेस जो है अगर ये शादी कर लें। और ये कार्ड डिटरमिन करेगा कि अगर ये जो हैं वो, मुझे सिर्फ ये बताएगा इससे पहले कि मैं आगे वाला कार्ड इसका पलटूँ, कि अभी क्योंकि इतनी सारी मैं रीडिंग्स करता हूँ मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रहा कि लास्ट टाइम जब हमने इनकी रीडिंग करी थी तो क्या इनकी शादी होने वाली थी, ये पेरेंट्स फोर्स कर रहे थे शादी करने को, या घर पे क्या सिचुएशन थी। मुझे थोड़ा सा ये बता दो। मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, आई डोंट नो इफ़ यू आर वाचिंग एनी मोर और नॉट, बट आई विल जस्ट टेल यू दैट ये जो चीज़ें हैं ये चलती रहेंगी जब तक शादी नहीं होती। और अगर शादी नहीं होती तो क्या होगा,
which is going to be depicted in this card. It is going to be very, very difficult. She's getting card number 13 in the future, meaning that things will be extremely difficult until and unless you know, she gets married. She gets married and she moves out. जब तक ये वाला चीज़ नहीं होगी तो ये ही चलता रहेगा. Without this, अगर ये नहीं होगी शादी तो ये कार्ड जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये कार्ड इधर आ जाएगा. ऑलराइट, मगर जैसी शादी हो जाएगी तो then this card will be removed. I will take out one more card. Look at that. And the boy will come for the rescue. I've plucked out one more card. The boy has to come for the rescue. और अगर boy नहीं आएगा तो then it is going to be very, very difficult. That was a 3-card reading for your friend Alino. I hope that it gives you some insight and I hope that it gives you some peace. Magic in my bones is saying, have you drawn bats on the back of your card? They look like bats. They look like bats, but it's just like a motif. Different kind of motifs that are drawn in the back. Okay. K-pop Sarang is saying, can the Enigma portal reveal secrets from past lives? Nahi, Enigma portal is used to manifest your goals in your current life. So it cannot reveal secrets from past lives. उसके लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ. अगर आपको कोई चीज़ें रिवील करवानी है या कुछ ढूंढना है इनसाइट्स, रीडिंग के चार्जेस यहाँ पे लिखे हुए हैं. मेरी बैंक डिटेल जो है वो यहाँ पे मेंशन्ड है. एनिग्मा पोर्टल जो है, अगर आपकी कोई भी 10 विशेस हैं, अगर आप उनको पूरा करना चाहते हैं तो उसको जो है वो पूरा करने के लिए एनिग्मा पोर्टल लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं. अलीनो इज सेइंग, थैंक यू सो मच शहीर, सो काइंड ऑफ यू, यू आर मोस्ट वेलकम. मोहम्मद कैफ कह रहे हैं, डू यू टीच टैरो टू? नो, आई एम नॉट टीचिंग टैरो राइट नाउ बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है अभी. वंस आई ग्रो माई मेम्बरशिप कम्युनिटी टू to a substantial amount, then if my members want to learn the tarot, then we can perhaps do a course or like some kind of a class for it. But it will definitely be live. It is. I don't think I'm gonna. Who knows? Maybe I'll record it now that I have the means to record and stuff. Maybe I will. But अभी इसकी इतनी ज़्यादा demand नहीं है. But I would love to teach the tarot. This is something I'm very, very passionate about. I really enjoy looking at tarot cards under microscopes and just I just find the imagery very, very fascinating, specifically of these cards, because there's very different kinds of tarot cards. There's Rider-Waite, there's a Moon tarot, there's all kinds of different tarots. There's the Crow tarot. You can even get tarot cards with like movies now, with movie characters. So there's lots of kinds of tarots. There's but anyway, there's also the Marseille tarot. These are Marseille cards. Tarot de Marseille, which is also what you see in the credits of my show. All right, let's see. Muneeb Rao is saying, my question for today. All right, Muneeb is a platinum member, which is why he gets a reading in every session. Muneeb is saying, when I reflect back towards my whole life, I find a pattern of 266 days of day cycles where small changes happen after 266 days. But major changes occur after 266 multiplied by 3, 798 days, or in multiples of 266, 798 days. Alright. I want to know if my observation about this pattern is correct or is just a fluke and there is no basis behind it. If this is something that you have discovered, let's see what the cards have to say. We're going to do a reading. It's time for a 3-card reading. We're doing a reading for Muneeb, who is a platinum member. Right. Okay, जो भी आपकी कैलकुलेशंस हैं
पहले मैं आपको बता दूं, हालांकि कार्ड रीडिंग यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, बट मैं आपको पहले ये बता दूं दैट ये जो भी आपकी जो इनसाइट्स हैं, जो भी आप कर रहे हैं अभी, पहले मैं आपको ये बताऊंगा, ये मिडिल कार्ड बताएगा कि क्या ये एक्यूरेट हैं या नहीं। ये जो आपकी इनसाइट है, ये मिडिल कार्ड हमें बताएगा कि क्या ये एक्यूरेट है, ये क्या ये एक्यूरेट नहीं है। मे बी लाइक दिस, लाइक मे बी इट इज़ नॉट एग्जैक्टली द काइंड ऑफ डे दैट यू टॉकिंग अबाउट, सो दिस कार्ड विल टेल अस एग्जैक्टली दैट. What the future card is telling us is that this is bringing you a lot of knowledge and insight through this procedure that you're following, meaning that you are going to be able to preempt or intuit major changes in your life, or even small changes in your life before they even happen, because of this new discovery that you've made about your life, which is a very fascinating discovery. Majority of the people do not pay as much attention to these small things, but it really goes to show who you are, which is why it reveals a lot about you, that like you are someone who's not just sharp in terms of just like how to live your life, but even from a spiritual perspective, you are very very awakened, and you are someone who is like a man of science and is a man of God both at the same time. तो ये कार्ड हमें बताएगा कि ये जितनी भी जो ये मिक्स हो रही हैं दोनों दुनिया, जो आपके करंटली आप जिस तरीके के आप इसका कंकॉक्शन एक बना रहे हैं, इसको मिक्स कर रहे हैं, इज़ इट इवन एक्यूरेट और नॉट? आई ऑलरेडी फील दैट it is very accurate, but this card will tell us exactly. It is going to be the representation of something where we can see in terms of measurement how it's going to be. If it's a positive card, we're going to say that it is entirely accurate. If it's a negative card, we're going to see that maybe you need to go back to the drawing board and see something is on or off. But let's see. पहले मैं थोड़ा सा इस कार्ड के बारे में बात कर लूँ, दैट ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि आपने इस चीज़ को रियलाइज़ करा है, ये आप बहुत टाइम से इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए आ रहे हैं, और ये सिर्फ इट इज़ नॉट द थिंग दैट यू हैव डिस्कवर्ड अबाउट योर लाइफ कि अच्छा ओके इतने दिन में इतना होता है। आपने इस तरीके की बहुत सारी डिस्कवरीज करी है अपनी ज़िंदगी के बारे में। तो ये तो एक नंबर्स की डिस्कवरी है, बट इस तरीके की इससे मिलती जुलती आपने और भी बहुत सारी डिस्कवरीज करी हैं अबाउट about like different things, or perhaps transitional periods in your life, or things coming and walking out in your life. तो ये जो है पहला कार्ड जो है वो ये बता रहा है। अब हम जानेंगे कि एग्जैक्टली ये जो पैटर्न्स हैं ये फ्लूक हैं या इसके पीछे कोई बेसिस नहीं है, या ये बिल्कुल एक्यूरेट है। एंड द कार्ड दैट यू गेट इन द प्रेजेंट इज़ लिटरली the scales which measure everything accurately. So it is literally the calibration card, I would say. And it is also the card of infinity, which is card number 8, meaning that you are not someone who is very, very precise with your calculations, but you are extremely accurate in terms of making these discoveries. So I would just say that kudos to you, like, just by firstly to come up with this idea and to pick up on this pattern. It really like it really shows like how developed your mind is in terms of like thought patterns, like your the command you have over just utilizing all these different ideas and different worlds, and how you're able to plug one thing from the other. Because talking about numbers and then applying them to your life, and then realizing and picking up on the fact that like this is exactly when it happens, and then it does happen. Now what I would be interested in would be to know that when the next cycle is coming forward, and will you be able to do something like that. I will pull out one more card for you. But I do see over here that your knowledge, you're filled with knowledge, and as you grow older, this is just going to increase with time. Just for fun, I will take out one more card. Let's see. It means that it means that
not only is it going to be something that you will be doing more and more accurately as you move forward, Muneeb, but this will help you uncover a lot of hidden things, things that perhaps would go unnoticed generally in a person's life, but because of these patterns, you will be waiting for them. You will be acknowledging them before they even occur, and that's why you will be able to anticipate them extremely accurately. That was Muneeb's 3 card reading. I hope that it gives you some insight, and I hope that it gives you some peace. Muneeb Rao is saying, thank you so much, Shaheer. You are welcome, Muneeb. Mohammed Kaif is saying, has someone ever told you that you look like Ben Affleck, the Batman? Alright, that is a huge compliment. Wow, I'm getting a lot of compliments today. Perhaps it's a good day. Musfira is saying, hi. Hello, Musfira. How are you doing? Fakih Hadid is giving a thumbs up. All right. Muneeb Rao is saying, I started noticing it after watching your Fahad Mustafa episode. I watched it maybe 100 times and these numbers were pulling me. I specifically watched last segment. All right. Yes, I remember that game with Fahad Mustafa. Alino is saying, yeah, he's handsome. Thank you very much. Yes, I remember that segment with Fahad Mustafa. It was a triangle of telepathy where I don't remember exactly what happened in that episode, but we took different numbers and those numbers were connecting to not only him but other people also through somebody he called over the phone, and I believe he called Hania Amir. So, yes. Alino is saying, will you upload this live show? Yes, absolutely. This will be uploaded. This will be there for everybody to watch. Muneeb is saying, I found out that this 266 and 798 days are so accurate for my life events with the accuracy of... Wow. That's amazing. That is awesome. K-pop Sarang is saying, can anyone access the Enigma portal or do you need special abilities? Anybody can access the Enigma portal as long as you get it programmed by me. Then yes, you can access the Enigma portal. It will be on your phone. But आपको वो ख़रीदना पड़ता है क्योंकि मैं आपके लिए वो कस्टमाइज डिज़ाइन करके आपको भेजूँगा. तो इस तरीके से उसका एक्सेस आपको मिलेगा कि मैं आपके लिए वो डिज़ाइन करूँगा. इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन जस्ट फाइंड ऑनलाइन. Musfira is saying, I'm sorry for yesterday. What happened yesterday? Alino is saying, hi, Musfira. Uruj is saying, I want to know about the chances of my settlement in abroad where success is destined for me and how my relationship with my husband would mold over time. Uruj, बहुत सिंपल है. अगर आपको रीडिंग चाहिए, 3 कार्ड रीडिंग चाहिए अगर, तो उसके चार्जेस 5,000 रुपीज़ हैं. 7 कार्ड रीडिंग अगर चाहिए उसके चार्जेस 15,000 रुपीज़ हैं. मेरी बैंक डिटेल जो है वो यहाँ पे मेंशन्ड हैं. जैसे ही आप फंड ट्रांसफ़र करेंगे आपकी रीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी. अगर आप चाहती हैं कि आपको हर सेशन में रीडिंग मिले, मैं हर एक दिन छोड़ के एक दिन लाइव आता हूँ, पूरे हफ्ते पूरे महीने लाइव आता हूँ. अगर आप चाह रही हैं कि आपको पूरे महीने हर सेशन में आके बस बग़ैर पैसे भेजे अगर आपको रीडिंग मिले, तो आप मेरी प्लैटिनम मेंबरशिप ले लेंगे. जितने लोगों के नाम आपको दिख रहे हैं ग्रीन के अंदर लिखे हुए, आपको दिख रहा होगा लोगों के साथ ब्लू बैज बना हुआ आ रहा है चैट के अंदर, ये सब मेरे मेंबर्स हैं. तो आप भी मेरी प्लैटिनम मेंबरशिप जो है वो ले सकती हैं.
इन सबको जो है वो रीडिंग्स मिलती हैं, जब भी आते हैं मेरा सेशन ज्वाइन करते हैं, क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, इनको फ़ौरन रीडिंग मिल जाती है. तो आई वुड रिकमेंड becoming a platinum member if you are serious about getting insights, not just this one time but all throughout the month, every month. खान अली खाना खान कह रहे हैं, वेयर इज़ योर इंस्टाग्राम अकाउंट? मेरा इंस्टाग्राम जो है वो डिसेबल्ड है, एंड होपफुली आई विल गेट इट बैक सून. लेट्स सी. Musfira saying according to yes. Oh, okay, you are the 9-year-old Musfira, who I don't think is 9-year-old. Let's see. Let's see what is going on over here. There's someone very experienced behind this. I do not believe Musfira is 9 years old, but let's see. Muneeb Rao is saying I highly recommend the platinum membership. Thank you very much, Muneeb. Muneeb Rao himself is a platinum member, and he gets a 3-card reading in every session, and he also gets exclusive access to my Enigma Dreamcast subliminal soundtrack system. जैसे Enigma पोर्टल है, इस तरीके से Enigma Dreamcast है, जो कि subliminal soundtracks हैं which help you complete the 24-hour manifestation cycle. तो वो मेरा brand new system है which people can just, they're soundtracks that you listen to and they help you manifest amazing things in life. Musfira is saying I'm 9-year Musfira. All right, okay, fine. You are 9-year Musfira. All right. Mohammed Kaif is saying your name is being shown off your official account, but your info disappeared, Shaheer. Yes, because my Instagram is disabled by Instagram. I'm trying to recover my Instagram, but currently I do not have access to my Instagram. Khan is saying, I want to buy your astral projection course, but your Insta was disabled. The astral projection book, it's an e-book. It is for, I remember, it is for 60,000 rupees. 60,000 rupees. The Teekaboo course is for 80,000 rupees. The astral projection book is for 60,000 rupees. 60. अगर आपको इसी वक्त अभी बाय करना है, मैं अभी ऑनलाइन बैठा हूँ, आई कैन सेंड इट टू यू फ्रॉम हियर. माई बैंक डिटेल्स आर मेंशन हियर. ये मेरी बैंक डिटेल्स है, आप सेव कर लें अपने पास, या बाद में अगर लेना हो आप सिर्फ इस अकाउंट पे जो है 60,000 ट्रांसफ़र करेंगे एंड मैं आपको यहाँ से जो है वो ईमेल कर दूँगा. तो अगर अभी करना है तो मैं अभी कर दूँगा, अगर बाद में करेंगे ट्रांसफ़र तो फिर टिकटॉक पे मेरा अकाउंट है द एनिग्मा पोर्टल के नाम से, द एनिग्मा पोर्टल. If somebody can type that for Khan over in the comments, that would be nice. तो वो जो है वहाँ पे आप मैसेज कर दीजिएगा तो मैं आपका मैसेज देख लूँगा if you're interested. But that is the price of the e-book which is called Astral Projection with Shaheer Knows, जिसके अंदर पूरा स्टेप बाय स्टेप मेरा मेथड है. सालों साल जो मैंने इस्तेमाल किया है एंड उसको रिफ़ाइन किया है, एंड नाउ फाइनली it is now a bulletproof method for anybody to practice astral projection safely from the comfort of their bed. And मैं वाहिद बंदा हूँ जिसने नेशनल टीवी पे एस्ट्रल प्रोजेक्शन प्रैक्टिस की है. यूजुअली आप लोगों के बारे में सुनेंगे कि लोग करते हैं, पॉडकास्ट आपने सुना होगा, बट आई एम द ओनली वन हु एक्चुअली हैज़ प्रैक्टिस इट ऑन नेशनल टेलीविज़न. कहीं भी दुनिया में, कहीं भी अमेरिका में, यूके में, कहीं भी इंडिया में, चाइना में, किसी ने भी आज तक नेशनल टीवी के ऊपर एस्ट्रल प्रोजेक्शन जो है वो प्रैक्टिस नहीं की है. बट इफ़ यू बाय द बुक, उसमें पूरा मेथड मेरा लिखा हुआ है किस तरीके से सेफली एस्ट्रल प्रोजेक्शन जो है वो उसको प्रैक्टिस करते हैं.
द इनिग्मा पोर्टल जो है उसके चार्जेस हैं, अगर आपको 25 डेज़ डिलीवरी टाइम चाहिए कि 25 डेज़ में आपको आपका पोर्टल मैं बना के भेजूँ, तो उसके चार्जेस 1,50,000 रुपीज़ हैं। अगर आपको 4 दिन में एक्सप्रेस डिलीवरी चाहिए तो उसके चार्जेस जो हैं वो 2 लाख रुपीज़ हैं। सो यस, खान अली खाना खान कह रहे हैं आई विल DM यू ऑन टिकटॉक। ऑल राइट, श्योर, यू कैन DM मी ऑन टिकटॉक। All right. Let's see what people are saying. Musfira is saying, so when will you be live tomorrow? Tomorrow I'm not going to be live. Now I'm going to be live on Friday. Monday, Wednesday, Fridays को मैं live आता हूँ 9 PM onwards. But if you subscribe to my YouTube and press the bell icon, so you will get a notification whenever I go live, because sometimes I even come live on Saturdays depending on whenever I have time. But Monday, Wednesday, Fridays 9 PM onwards I am live. Also, if you're interested in getting a reading in every session, I highly recommend becoming a platinum member. And for those of you who are wondering कि किस तरीके से reading मिलती है, तो you can simply watch this. The charges for a 3-card reading are 5,000 rupees, and the charges for a 7-card reading are 15,000 rupees. You can transfer the funds to the bank details mentioned here. Once the funds are transferred, your reading will begin. You can also join the inner circle of Shaheer's Platinum members and get 3-card readings all month long in every session. The link to get the Platinum membership is pinned in the comments of the live chat. Make sure your VPN is open before you click on the link, or else the membership page will not be accessible. Let's see what everyone is saying. Musfra is saying, will you wish me luck because I slipped and got hurt pretty bad? Of course, I wish you a speedy recovery. I hope that you recover very, very soon. And I hope that you are careful next time. Musfra is saying, I slipped into the wall. All right. Gotta be careful next time. Okay. Also, for all the people who are watching, if you can recommend a nice name
if you can recommend a nice name for my podcast, that would be amazing. Musfra is saying now my thumb is turned. Alright. That is very gruesome. I hope that you recover very, very soon. For the people who are watching, if you can recommend a nice name for my podcast, which is going to be taking place on my ship, please mention in the comments. Alright. Let's see, what did I miss? Mohammed Kaif is saying, come to know about yourself, the name I recommend. The podcast is like, about talking about random things. So it is not going to be about tarot, it is not going to be about answering questions. Muneeb is saying the podcast name should have the word ship in it. I think that's a very good recommendation. It should have the word ship in it. I will incorporate that. That's a very good idea, Muneeb. I will take your advice. That's a very good idea. The podcast should have the word ship in it, because we're doing it on the ship. Musfira is saying, what do you think when I grow up I will become a businesswoman? Musfira, if you want, you can become a platinum member, or just like last time, you booked a 3-card reading or 7-card reading, you can do that. So you have to follow the rules like you did the last time, and we can do your reading.
Magic in my bones is saying nocturne. Alright. Furva Noor is saying hello. Hi Furva. How are you doing? Alright. I think I would incorporate the word ship, and maybe we could call it, since Muneeb is saying add the word ship to it, maybe we would call it the spaceship podcast. I think that would be nice. Mohammed Kaif is saying sometimes you can pick up the person from public and give them free reading just as lucky draw, just for fun. I think that's a very good idea. I think that's a very good idea. I will not just. I think if a regular person wins the lucky draw, then they get a 3 card reading. If a member wins the lucky draw, they get a 7 card reading. I think that would be fun. I think we can do that, and maybe we can use the numbers of destiny to do that. I think that would also be a lot of fun. I think that would be a lot of fun. We can do that. We can do that. We can do that from the next session. Musfira is saying, Shaheer, what is your real name if you don't mind me asking? My name is Shaheer. That is my real name. It is not a fake name. It is not a name that I've given myself to be cool. My name is Shaheer. Furva is saying, I am fine. What about you? I am good also. I am good also. Musfira is saying, what lucky draw reading? So Mohammed Kaif has proposed that sometimes we can do a reading for people for free, and they can pick, we can do a lucky draw. So I have a setup of numbers over here, and we can figure out a way of how to do a lucky draw. But anyway, guys, I will definitely take your advice, Muneeb Rao, on the name of the podcast having the word ship, and Mohammed Kaif. That's a very good idea that I should do a lucky draw so that it's fun, people would take part in it, and if a walk-in gets the number right, if they guess the number correctly, then they would get a 3 card reading, and if a member gets the number right, then they would get a 7 card reading. So that would be fun. That would be fun. That would be fun.
Okay, guys, I think that I am going to call it a night over here, since all our members have gotten readings. Our walk-ins, they also got their readings, and from the next session, I will incorporate this lucky draw, so it's going to be fun. So whenever there is a moment where people are not getting any readings, we will do a lucky draw, maybe once or twice in every session. So that would be fun. It would add 2 additional readings for the sessions where I feel like, okay, you know what, today there is not that many readings, so we can play that game. Muneeb is saying, I'm working on the lines of aliens, galaxy, citizenship, maybe some interesting name comes forward. Alright, okay. Mohammed Kaif is saying, are you going to do it now? No, I'm not going to do it right now, but we will do it in the next session. Not right now because I don't have the thing set up right now. I will make sure it is done correctly, so we will do that from the next session. And yeah, I'm gonna call it a night. Furva Noor is saying, I want a reading. Can you just give me like 10 minutes? 10 minutes. I can wait. 10 minutes. 10 minutes. If it's not that urgent, maybe you can get it in the next session, Furva. Is that okay? Because my tummy is gargling right now from hunger, and it's asking for pizza. So if it's not that urgent, maybe we can do it in the next session. Or maybe I have a better idea. Maybe, Furva, you can post your question. I can do your reading. Alright. And then right after this, after doing your reading, I will go offline and you can just go back and see your reading, because मैं ये session post करूँगा. So if you want, we can do that. I can do your reading right now. Then I'll go offline and the session will be posted right away. Right after this, अगर आप जाके YouTube पे Shaheer Knows लिखोगी तो वो यही session वापस आ जाएगा पूरा. And you can go right at the end and you can watch your reading whenever you want. So let me know if you're interested in getting the reading right now, or do you want it in the next session? That's fine also. Does not matter. It's completely up to you. I've given you both options. Furva has said okay, but has not specified okay to what. Okay to the first option or the second option. Musfira is saying okay bye, but I have just received an amount. I think it's from Furva, so we will do Furva's reading, I guess. Which option? Second option is which option? Do you want the reading in the next session? Did you transfer any funds? Just specify if you want a reading in this session. I will do it in this session, and also let me know if you've transferred the funds. Nashra Noor is saying, hi, how are you? I am good, Nashra. How are you doing?
But have you transferred any funds to me right now or no? That is what I'm asking. Have you transferred already? Furva is saying, so I don't know what to do. If you wanna go, you can. I'll do your reading and then I'll go. You can post your question, I'll do your reading. You can post your question, I'll do your reading and then I'll go. But let me know if you have transferred the amount. Have you transferred the amount? Alright, then you can post your question, I'll do your reading, and you can watch the reading whenever you want. You can watch it live, you can watch it later. I will be posting this. So, not to worry. Waiting for Furva. And in the meanwhile, जो लोग भी देख रहे हैं ये live इस वक्त, and if they're wondering how to get a reading from me, you can follow these rules. The charges for a 3-card reading are 5,000 rupees, and the charges for a 7-card reading are 15,000 rupees. You can transfer the funds to the bank details mentioned here. Once the funds are transferred, your reading will begin. You can also join the inner circle of Shaheer's Platinum members and get 3-card readings all month long in every session. The link to get the Platinum membership is pinned in the comments of the live chat. Make sure your VPN is open before you click on the link, or else the membership page will not be accessible. Alright, Furva has posted her question. I have read it. Mohammed Kaif is saying, on Friday, what time will you come? 9 PM onwards. 9 बजे के बाद कभी भी मैं live आ जाऊँगा. So keep an eye out. लेकिन अगर आपने सब्सक्रिप्शन ली हुई है मेरी YouTube की, मीनिंग दैट अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ और बेल आइकॉन प्रेस किया हुआ, तो मैं जब भी लाइव जाऊँगा आपके मोबाइल फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगी कि Shaheer Knows is now live. Okay, we are doing Furva's reading. Furva is saying, so I've been feeling a bit unsure about where I stand when it comes to love, like I'm in between waiting for something meaningful or simply moving forward with an open heart. So I just want some clarity on what direction is best for me. All right, let's do it. It's time for a 3-card reading. Let's see. Ooh. All right, something very, very interesting is going on, meaning that the tarot is saying that you should not opt for any kind of a relationship where things are not solid or thought through. The tarot is asking you to make a very solid commitment with a man who is going to be committing to you and is going to be taking you seriously. So it is saying do not get into a relationship but opt for marriage, because when you will do that, that is when everything is going to be perfect the way that you've always wanted to. Also, जिस चीज़ से आप पहले से जो चलाती हुई आ रही हैं, और even till over here, this is something that the energies are not balanced. Like from the other side, if there is a guy that you're interested in perhaps, or if there's something that you're wanting, it has always been a struggle perhaps, or it has not always been perhaps reciprocated in the similar manner, in the same manner, like the way that you have put your feelings forward. But आगे जाते हुए जो है वो if you are thinking about moving with an open heart, move with an open heart towards the person who is making a solid commitment, who is saying that, you know what, I am willing to marry you and I want to spend the rest of my life with you. Then and only then you are supposed to move
forward with an open heart. जब तक ये शख्स आपकी ज़िंदगी में नहीं आता, I would say that do not settle for something that is like a relationship or somebody saying that let's be friends and let's explore what can be done. In your case, that is not something that is bringing a lot of joy. In fact, it will lead you to other places. But as soon as a person is walking into your life and they're offering you commitment, the kind of where they say, I want to marry you, that is when you say yes. The tarot is saying that that is when things are going to be the way that you've always wanted them to. But this is the case in which you should move forward with an open heart. Usse pehle do not move forward and be still as to where you are. That was your 3-card reading, Furva. I hope that it gives you some insight and I hope that it gives you some peace. Alino is saying, tell about the lucky draw in just few words, then you can go have some pizza. The lucky draw is going to be played with the numbers, and the rules are going to be very, very simple. जो अभी मेरे दिमाग में आया है, the numbers of destiny can perhaps be this, that I am going to take one card out randomly like this that has fallen out. We do not know what this card is, and then we're going to shift the numbers, and every number is going to have a different card on the back, and everybody will comment their numbers. So whoever guesses the card correctly out of the 22 cards, Furva Noor is saying thank you so much. You are most welcome, Furva. So whoever guesses the card correctly, so for example, if you get card number 9, the numbers are going to be shifting every now and then. तो जिसने भी कार्ड फॉर एग्जांपल गेस किया कि ये हैंगमैन है यहाँ पे और आपका नंबर है उसके पीछे हैंगमैन निकला, तो उसका मतलब है आपने सही गेस किया है. अगर आप मेंबर होंगे, अगर आप जो हैं वो क्या कहते हैं प्लैटिनम मेंबर होंगे और आपका सही निकला है, तो आपको 7 कार्ड रीडिंग मिलेगी, जो कि प्लैटिनम मेंबर्स को सिर्फ हर सेशन में 3 कार्ड रीडिंग मिलती है. बट अगर सही गेस किया उसके अंदर तो 7 कार्ड रीडिंग मिलेगी रिगार्डिंग एनीथिंग, एनी क्वेश्चन यू वांट टू नो. अगर आप मेंबर नहीं और आपने सही गेस किया तो आपको 3 कार्ड रीडिंग मिलेगी. In fact, let's do it this way. If you are a platinum member, you'll get a 7 card reading. If you are an Enigma Dreamcast member, you will get a 3 card reading. And if you are a walk-in and you have just guessed correctly, you will get a 1 card reading. So that way everybody can take advantage of it, no matter where you fall. And the 1 card reading will be as much detail as I can pull from 1 card. I will do that. So it will depend. Do we see a 7 card reading for a platinum member? Do we see a 3 card reading for an Enigma Dreamcast member? Or do we get a 1 card reading? That will depend. So these are one of the rules of the game. I'm very excited. I think Mohammed Kaif gave a very excellent idea, and now we can take this forward. And finally, we have given some purpose, some true purpose to the numbers. This segment of ours. Alright, Khadija Manzoor कह रही हैं, Shaheer, how's Aslan now? You were not coming live previously if I'm not wrong. Aslan जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, मेरी अभी उनसे कल ही बात हुई थी, वो बिल्कुल ठीक हैं. और मैं जो हूँ मैं लाइव आता हूँ, ये मेरा YouTube चैनल है, यहाँ पे मैं लाइव आता हूँ. एक दिन छोड़ के एक दिन लाइव आता हूँ. मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडेज़ को मेरे यहाँ पे लाइव होता है 9 PM ऑनवर्ड्स पाकिस्तान टाइम. 9 PM के बाद मैं कभी भी लाइव आ जाता हूँ. अगर आप चाहती हैं मेरे लाइव सेशंस का हिस्सा बनना तो आप सब्सक्राइब कर लें मेरे यूट्यूब चैनल पे. और मैं यहाँ पे आके 3 कार्ड रीडिंग्स करता हूँ लोगों के लिए 5000 रुपीज़ की, और 7 कार्ड रीडिंग्स करता हूँ जो कि यहाँ पे होती हैं इधर इस जगह पे. 7 कार्ड रीडिंग्स जो इन डेप्थ होती हैं ज़्यादा, वो 15,000 रुपीज़ की होती हैं. मेरी बैंक डिटेल जो है वो यहाँ पे मेंशन होती हैं. लोग मुझे पैसे ट्रांसफ़र करते हैं और फिर उसके बाद मैं उनके लिए रीडिंग्स करता हूँ. जिन लोगों के पास मेरी प्लैटिनम मेंबरशिप है, जिसका लिंक मैंने कमेंट्स में जो है वो पोस्ट में पिन किया हुआ है, उनको हर सेशन में कभी भी कोई भी सेशन में ज्वाइन कर लें, उनको हर सेशन में 3 कार्ड रीडिंग मिलती है ऑल थ्रू आउट द मंथ. सो आई वुड प्रेफर कि आप प्लैटिनम मेंबर बने एज़ कम्पेयर टू कि आप 1 टाइम रीडिंग लें, क्योंकि अगर आप 1 टाइम रीडिंग लेती है उसके पैसे चार्जेस जो हैं 5000 रुपीज़ जो हैं वो प्लैटिनम मेंबर की जो रीडिंग है वो पर रीडिंग जो है वो उनको अगर क्योंकि वो बल्क में बाय करते हैं एक तरीके से, एक दफ़ा में पेमेंट करते हैं पूरे महीने की रीडिंग्स की,
तो उसको इससे बहुत कम चार्जेस जो हैं वो पड़ते हैं। मतलब कि वो जो एक दफ़ा प्लैटिनम मेंबर की जो फ़ीस भरते हैं, ऑल थ्रू आउट द मंथ की जो उनकी रीडिंग्स मिल रही हैं वो फिर कम प्राइस की हो जाती हैं। Alino कह रही हैं इट्स द मोस्ट परफेक्ट आइडिया शहीद, थैंक यू वेरी मच। ऑल राइट गाइज, वी आर गोइंग टू go out with love, and I just want to say thank you to everybody that sent in questions, that took readings and became a part of this live show, which is Shaheer Knows Live. I will see you guys next time, and with that being said, my name is Shaheer Knows, and let's do this again sometime. If you enjoyed tonight's live session, please hit subscribe and click the bell icon so that you're notified whenever the next session begins. We look forward to your questions in the next episode of Shaheer Knows Live.